हेलो हेलो। अब आएगी। आ गई। हेलो। अब आ गई। हाँ। सही आ रही है। ज्यादा तेज कम तो नहीं। हाँ जी। कम ज्यादा तो नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा है बहुत कम। ऑल राइट, राधे राधे दोस्तों। माइक का थोड़ा ग्लिच हो गया था, वही फिगर आउट कर रहे थे। अब ये हो गया है। सो हियर वी आर। स्वागत है आप सभी का एक और लाइव स्ट्रीम में, जहाँ पे हम अपना एक छोटा सा साइड प्रोजेक्ट कह लो, सैस कह लो, कुछ भी कह लो, बना रहे हैं आरओआई मॉन्क। और आज हम कंटिन्यू करेंगे कल जो हमारा हल्का सा हमें लगा था एक छोटा सा चीज होगा, बट इट टुक क्रेजी टर्न और चीजें बहुत नो ग्रैंड सी होती चली गई। छोटा सा चीज हमें लगा था कि ऐसी फुद्दू सा होगा, उसको टाइम लग गया बहुत। एनी हाउ, जोक्स अपार्ट। So what we were doing yesterday was, when you click on this and you put some already one of the names of database, right? uh, Not you, क्या हो रहा है? Not even you. So basically what it does is, जैसे ये उठा लें अगर हम, right, and if you put it here, तो ये यहाँ पे ऐसे घूम घूम के and it should tell कि पोर्टफोलियो नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करके, राइट। तो ये फंक्शनैलिटी बना रहे थे हम, बट द थिंग इज उसमें थोड़ा सा भी वो अभी आपने देखा CSS नीड्स टू बी फिक्स्ड, राइट। तो दैट्स व्हाट वी आर गोना स्टार्ट विद बेसिकली, राइट। तो हमने सर्कुलर प्रोग्रेस को इंपोर्ट कर लिया है और हमें यहाँ पे, राइट, अगर रिस्पॉन्स लोड हो रहा होगा तो हम सर्कुलर प्रोग्रेस दिखाएंगे, नहीं तो हम उसे कंटिन्यू दिखा देंगे, राइट, कंटिन्यू वर्ड, विच इज परफेक्टली फाइन। बट अब उसका सीन क्या हो रहा है, वहां पे कलर मिल जा रहे हैं, वो भी ब्लू है बैकग्राउंड में मेरा और ये भी ब्लू है प्राइमरी कलर इसका। तो वी नीड टू डू समथिंग विद द कलर। जैसे ओके, एक काम करते हैं, इसमें अभी डालते हैं 10 सेकेंड्स का अवे न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व सेट टाइम आउट रिजॉल्व 5 सेकेंड का डाल देते हैं। अभी अपने आप कुछ नहीं करेगा, राइट। तो यू सी दिस इज व्हाट इज हैपनिंग यू, राइट। तो अगर हम कलर इनहेरिट कर लेंगे फिर तो वही बात हो जाएगी। लेट्स सी कलर इनहेरिट प्रॉपर्टी देख के क्या होता है। गो टू साइड नाउ बार, बिकॉज आई फर्मली बिलीव के नहीं, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। पहले वाले का कैसे आया? तो वैसे थोड़ा वो करो जावास्क्रिप्ट वेरिएंट डिटरमिनेट। Okay, let me just copy this. Indeterminate 8. Let's just try out few things. अच्छा, अब props नहीं है, वो बोलेगा props नहीं है। props ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेते हैं पहले।
Where is props? The props we are getting from there. This is the best thing about MUI. I can edit right here. राइट यहाँ पे अभी इसमें फेसबुक सर्कुलर प्रोग्रेस को हमने इंपोर्ट किया है फेसबुक सर्कुलर प्रोग्रेस कुछ भी प्रॉप्स नहीं मिले हैं तो इट्स लाइक बेसिकली दिस ओके ओके तो बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ टू हाँ राइट मेक्स सेंस ओके let's see if this comes and if we paste it here and save make a quick save control D delete and now wow nah, never mind bro won't help it ये भी हटाओ color भी हटाओ I'll have to play around with that only let's do sx is equals to scale को कर देंगे 0.75 क्या हो गया भाई एकदम से इतने सारे कैरियर आ गए right and if I go to this is our portfolio name okay did not help huh no problem in that case div class name width full height full pg rate 500 let's see relative position absolute नहीं नहीं now का साइज कैसे वो कर सकते हैं हम oh I can do that I can do this only no कि अगर मैं उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूं तो वो अच्छा लगेगा राइट अरे बट अभी मैं वो कैसे करूं उसका साइज 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 साइज
SX size. Okay. Let's see if this works. Is default, right? So let's make it a 4. Okay, it actually got, or I don't know, man, matlab, smaller. Let's make it a 20. See, it is actually working. Yes. Now, if that is the case, I need to do थोड़ा सा CSS इसका class name. अरे अगर loading response true है तो background color slate का कुछ कर देंगे 700. हाँ, makes sense. यही दोनों प्रॉपर्टी हम ऐड कर देंगे इधर ना. कैंसिल बटन कहाँ है भाई? कैंसिल बटन, कैंसिल बटन. ओके 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 ओके. again add text right here and simply delete this line. Like if I do a simple disabled here, then I mean just remove this part for a second. Makes sense. Now what I need is I need a control shift I. इसका width जानने का है मेरे को. Styles में जाके inline flex text sm focus. Okay. height 9 p export px y कंप्यूटेड में आ जाएंगे. width is 60 pixels. 92 पिक्सल. तो अगर मैं बटन की क्लास नेम में परमानेंट विड्थ 90px ही रख दूं तो क्या होगा? देखा, दिस लुक्स ग्रेट. और उसका कलर करेंगे हम प्राइमरी का वही वही. बट यार प्राइमरी में ब्लू नहीं आ रहा. रुको यार. Let's see. 6 and
I know, dude. Color red. Let's see. Mm-hmm. Should be doing something more technical, but ठीक है चल. या नहीं ये कलर डाल देते हैं. उसको करो भाई लंबा. 5 सेकंड से कुछ नहीं हो रहा. चाहिए 15 सेकंड. Yes. So color is this, right? You need to change it to. हाँ तो कलर प्रॉपर्टी ही चेंज होगी, दैट इज फॉर श्योर. बट मैंने भी तो दी है, वो क्यों नहीं आई? क्या है? काम करते हैं ना भाई. इसको वो क्यों करना है, रिटर्न क्यों ही करना है इसको? यहाँ पे अटका नहीं सकता क्या? इसको रोक कैसे सकता हूँ? कलर जीरो ऐड कर देता हूँ. कलर मैंने डाला तो है, बट वो उठा नहीं रहा है. लेट्स सी दिस वर्क्स. यार एमयूआई के साथ यही थोड़ी दिक्कत है दोस्तों, बस के यू नो उसको कस्टमाइज करने में बहुत मेहनत लगती है. फॉर सम रीजन इट इज नॉट वर्किंग अगेन. In that case, let's see if this works.
ये प्रॉपर्टी है ना सबसे पहले, ये वाली। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। हाँ भाई फट गया। So let's see what happens now. काम करते हैं ना यार। अच्छा वो भी नहीं कर सकते। फट गया अजी फट गया। एक काम करते हैं ऐसे कलर करके देखते हैं भाई। आधा घंटा हो गया यार। And instead of all these BS, let's do something like this. ओह इनसाइड ना हुआ है। हाँ देखो कलर कस्टमाइज हो गया। नाइस। अब मुझे वो वाला हेक्सा डालना है जो मैं उठा के लाया था कहीं से, तो दिस हेक्सा। हाँ makes sense. Wow. अब simplest thing we could have done. तो एक चीज और हो गई। बट पता है क्या, कैशिंग हमें करनी चाहिए। रुको यार। एक कलर यहाँ नहीं है, आ रहा है। Oh, it is actually happening, but because that is disabled तो वो नहीं ले रहा, तो मेरे को थोड़ा और लाइट कलर चाहिए होगा। तो I don't know, maybe this or this. Let's see this. एंड मेरे को इसे भी डिसेबल करना होगा। तो अपना जो इनपुट है वो दिस।
disabled is equals to is loading response. इस लोडिंग रेस्पॉन्स नहीं है वेरिएबल का नाम, लोडिंग रेस्पॉन्स, ओके सॉरी, राइट, दिस मेक्स सेंस. Someone comes, writes p1, and let me quickly go and comment this. Want to see how fast is the database. Can't do anything. And portfolio name, please choose unique name, right? Okay. I guess second time it was cached automatically, so that is way better. And yeah, let's delete this line, save this, and uh, yes, if that name already exists, you can delete this. Console log, delete this, right? And yep, that is pretty much it, I guess. इसमें भी alert trigger dialog header title है, इसमें भी हम will put alert what you call description. अरे हट जा भाई, name of portfolio. And this needs to be reset whenever एरर कहाँ से दिखा रहे हैं हम, एरर ये दिखा रहे हैं, राइट, सेट एरर एंड where else, यहाँ पे एरर आया, ठीक है, let's see how this works now. We open it, we tell p1, is it capital P or a small p? Small p, thank god. We do continue, close it, okay, there's no way of closing it, we cancel it, press on new, cancel it, very good, continue, portfolio name cannot be blank, cancel it, correct, makes sense. Yes. अब इसमें आके यहाँ पे क्या है, टू डू इन्वेस्टमेंट लिए, हाँ ये करना है, तो फिलहाल इतने को कमिट कर देते हैं. फीचर न्यू इन्वेस्टमेंट बटन, कमिट कर लेंगे so that we don't have any more issues. Correct. Now comes the main part, ये वाला. Okay, if we click it, it takes me to somewhere if I'm not wrong, right? हाँ, portfolio name, right? Okay, makes sense. Cool. So let's start with fetching the name of the most recent what you calls, कितने हैं ये, 5 है ना, हाँ, let's start with that. ठीक है, तो portfolio 5 में export async function get recent portfolios. कितने पोर्टफोलियो चाहिए,
वो एक वेरिएबल में रख लेते हैं, राइट, जस्ट इन केस in future, right? Recent portfolios, get recent portfolios, number, value, amount, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू से दे देते हैं 5। यहाँ पे हम ईमेल यूजर का पाएंगे, ट्राई कॉन्स पोर्टफोलियोज, अवेट डीबी डॉट पोर्टफोलियो, फाइंड नॉट फर्स्ट। अब यहाँ पे जाएंगे हम प्रिज्मा वाले पे, prisma.io, लेट्स सी व्हाट इट टेल्स अस। ORM, quick start, ask AI how to get 5 most recent entries from database. So if I'm not wrong, order by take 5, find many. हाँ, that is what I was thinking exactly. तो find many रहेगा क्योंकि हमें बहुत सारे चाहिए, right? Where owner email इस यूजर के ऑर्डर बाय करेंगे और टेक 5 करेंगे। ऑर्डर बाय ऑर्डर करेंगे हम किससे? ऑर्डर करेंगे हम क्रिएटेड डेट या अपडेटेड डेट से करेंगे। तो अपडेटेड डेट का नाम कॉपी कर लो। फॉर सम रीजन आई एम नॉट एबल टू, बट ठीक है चलो। ऑर्डर बाय अपडेटेड डेट, हाँ, डिसेंडिंग टेक अमाउंट। इफ पोर्टफोलियोज रिटर्न डेटा, portfolios, else return message, else अगर हमारे पास डेटा नहीं है, रिटर्न मैसेज एम्प्टी, और कुछ एरर आता है तो एरर भेज दो। इसे भी मैसेज ही कर लेते हैं, नो, राइट। So that it would be easier for me to correct. Let it be page.j6 को हम बंद कर देंगे, हम आएंगे साइड नैव बार में, राइट, और हम जाएंगे सबसे ऊपर, यहाँ पे आएंगे। Now what we are gonna do is const recent portfolios, comma, set recent portfolios equals to use state, an empty array, and we are gonna do a use effect. Maybe why that, and just do, I'll have to do a use effect. Tell me friends, if I'll do a use effect, what will happen? Alright, when we loads, give me let temporary let response is equals to get recent portfolios. If response dot data, set recent portfolios response dot data, and of course this will be an async
uh, async, and that would be an await. क्या गड़बड़ कर दी? Right. या इसे बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा हमें कोड को अपने. So it is portfolios immediately invoked function लिख देते हैं ना. immediately invoked function कैसे लिखते हैं? ऐसे is this good? No. And we are going to use async log response. Let's see, hopefully this should work. Right, use effect is of course dashboard. Use effect. Okay, message आ रहा है. Let's do a data. Right, else if response dot message. अगर empty है तब तो कोई बात ही नहीं है. We'll let that be empty, and if it is an error, then I wanna retry this. But what is the point? Nothing, right? So we'll leave it like this. And now that we have recent portfolios, we can go to. इसको बंद कर सकता हूँ क्या मैं? Very good. हाँ. तो portfolio dot. हाँ. So it will be portfolio dot portfolio name. Let's make it a portfolio. ठीक है. Router updated. Avatar में image को figure out करेंगे, but later point of stage. अगर मैं यहाँ images डाल रहा हूँ, क्या वो भाई फट वट गया क्या कुछ? No problem.
Just gonna copy this text field and default value would be mind, right? I hope you understand what is going here. कोई दिक्कत नहीं है इसकी तो, right? Default value input props read only mark update the out route. ये क्या है भाई, ये क्या है भाई? Text field, अच्छा 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 अच्छा, I understand, but if I do, अच्छा okay, I understand what I have done here. कहाँ गया we remove this and hopefully we should be yes. Now if we go to the database, so you are basically telling me 22 ठीक है 17 26 53 और 58, wow, that is so weird. सो सबसे लेटेस्ट जो एडिट है वो है इसका, नहीं पहले डेट देखते हैं, 22 22 22 23 24, सबसे पहले तो ये हुआ ना P1 एंड देन 23 वाला ASDAD, हाँ तो सही तो है। ओके, अब हमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें फिक्स करनी पड़ेंगी बिकॉज इट आई हैव रिटन पुअर क्वालिटी कोड if I'm not wrong, or maybe it is the right thing, I just don't know. We get to know only right now on Clerk. Okay, someone texted me on Twitter. I was wondering who is that guy, certain person. Okay, right. These two lines I need here, and I will close this. Comment this text field. Again, I will comment you down. And अगर open है span में portfolio name edit है तो check icon के on क्यों, ठीक है इसको देखेंगे, ये है पेंसिल आइकन ही है बस, चेक आइकन, वेयर इज द डिलीट आइकन? ओके दिस, राइट, तो ऑन क्लिक E and E dot stop propagation, click this, let's see, and I'll also log 01 03, let's see how it goes. और ये थोड़ा उल्टा नहीं है क्या? अच्छा नहीं, पहले पेंसिल रहेगा ऑफ कोर्स व्हेन वी क्लिक इट, ओके
Cool, makes sense. If I click on this, I'll be taken there. Makes sense. Click on this, I come back to dashboard. If I click on this, again I am taken to there. Now if I click this, this is the interesting area part. Right, let me click this. Nothing happened. Huh, because that is what we wanted to do. Correct, makes sense. Right, so event dot stop propagation आप Google करके देखना. This is what saved our lives today. Right, and trash icon, same thing. On click, of course not you. है ना? और let's see. Okay, so we'll start with पहले edit functionality करते हैं and then we'll do the delete one. Right, makes sense to you all, I guess. I hope this makes sense to everybody of you. Right, so we are here, right, and we need index we are getting from here. So what we are gonna do is we are not gonna do this. We are gonna call a handle portfolio name edit, and we'll give it an index. Right. No, not exactly. Handle portfolio name save, and you're gonna do an edit. Right, and we are gonna copy both of them, go home, we come here, we declare both of them. Const handle portfolio is equals to, we get an index here and we do something with this. Right, now set portfolio name edit won't be just false, it will be an array. It will be an array. Right, it will be an array जो कि होल्ड करेगा सारे उसको पोर्टफोलियो कौन सा इन पर्टिकुलर एडिट होना है. राइट, तो सेव और एडिट. So when user will click on it, we will go set portfolio, let temp portfolio name is equals to edit is equals to this, and for index पे हम कर देंगे let's think about it. उसकी एडिट वैल्यू को ट्रू. राइट, एंड we are gonna set portfolio name edit is equals to temp portfolio name edit. जब यूजर एडिट पे क्लिक करेगा तब ये होगा, क्या होगा, हमें ये मिलेगा. राइट, and it will be an array of 5 falses. But that would be dumb. So how to create an
array in JavaScript. Let's quickly see. ऐसा कुछ नहीं कि मैं एक ही वर्ड दूं और वो सारे उसमें सेट हो जाए। So that means we have no option other than false, 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 false. But then, yeah, this is not the most optimal way. So when we are getting recent portfolios here, right? Response dot data dot for each item. For each item, what we are gonna do is let's temp उसका इंडेक्स चेंज हो सकता है। एक मिनट रुको यार। I create an object of name और तो उसका नेम तो चेंज हो गया ना। empty object an array and portfolio dot push object id item dot id. That is what we have, right? Yes, id comma portfolio name as port item dot portfolio folio name and add it as false. And after this, we are gonna set temp portfolio name edit. Makes sense when user will click on a particular edit one। हम क्या लेंगे, उसका ये उठा लिया सारा ऑब्जेक्ट, उसके इंडेक्स में गए, इंडेक्स में वो ऑब्जेक्ट मिला, उस ऑब्जेक्ट की एडिट प्रॉपर्टी को ट्रू कर दिया और उसको कर दिया सेव, राइट। एंड when we will be here, यहाँ पे पोर्टफोलियो बेसिकली टेक्स्ट एडिट का ही तो सीन है ना। हाँ portfolio name edit index edit, and this will break for sure because I just realized I made a mistake, but let's see. Yes, edit is not defined, right? We'll make it like this.
ये होगा, अब होगा ये सही। Correct, right? And if I click on this, this is not becoming editable. Why? Okay, let me see. If I click on this log handle index. ओ, हुआ तो था यार, उसको टाइम लगा थोड़ा। ओके, लेट्स वेट फॉर अ सेकंड कि ये प्रॉपर्ली रेंडर हो जाए एंड देन वील स्टार्ट। ओके, सो आई बिलीव दिस इज rendered fully. Okay, I know. Let's see. Okay, I click this. Wow, दोनों में true कैसे है भाई? I clicked only once. And if it's true, why is it not showing? Okay, because I believe I messed up something else, which is नहीं सही है ये तो portfolio. Let's see, for rest it is false, which is right. अयो, ट्रू हो जाएगा, इसका भी ट्रू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी देखना पड़ेगा। Okay, let's start with on click e e if it is editable, then event dot stop propagation. और if I'm not wrong, ये मैंने उल्टा कर दिया, अगर ये एडिटेबल है तो ये टेक्स्ट आएगा वरना पॉइंटर होगा। If this is true, three false, which is right. Okay, let's for a minute comment these two lines. Let's just work with the text field first. Routing का देख लेंगे, because this is a feature which I really want to ship, right? So, right, ऐसा क्यों हो रहा है? Okay, so if that is text field 6,
अगर ये ट्रू है यानी ये फॉल्स है, रीड ओनली नहीं है तो इट शुड बी एडिटेबल। आई एम नॉट एबल टू। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। Is it because it's not being re-rendered or something? That is the case. That is the case. I guess that is the case. That is the case. If I come here, log render, देखो हो गया ना। देखो वो हैंडल चले बट वो रेंडर नहीं होगा, उसको री रेंडर कराना होगा किसी तरह। If that is the case, इसको री रेंडर कराना है। I'll go to MUI first. Let's start with components, text field, spread code. Let me just take all of this out. Yes. And now I'm gonna put my text field there. Right. Variant is also standard display. ये हटा दो। कर्सर हटा दो। है ना, डिफॉल्ट वैल्यू हटा दो। ये इनपुट प्रॉप से रहने ऑन क्लिक हटा देंगे, है ना। And we'll create a button hello, or maybe just click me on click const read only read me comma set read me is equal to react dot use state false। अब बताओ कहाँ गलत है ये यहाँ बंद हो गया, ये यहाँ बंद हो गया, S6 यहाँ बंद हो गया, है ना, 6 यहाँ बंद हो गया। वन क्लिक सेट read
previous previous ये बंद हो गया, इसको बंद कर देंगे। अब क्या दिक्कत है भाई? मैं भाई ऐसे हटा दूं तेरा पूरा। ओके, नाउ आई रियलाइज्ड। या फिर ऐसे हटा भी सकते हैं ना, कुछ फर्क थोड़ी पड़ रहा है उससे। हाँ, default value is equals to hello। है, so what if I do it like this? And इसको देता हूँ true। दिखा दूँ ही ना कुछ तो। ये कर सकते हैं, बट दैट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव ऑपरेशन, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा रेंडर मारना पड़ेगा। हाँ, एपीआई देखते हैं यार। हम्म, wait a second, wait a second, wait a second। और मैं क्या इंपोर्ट कर रहा हूँ वहाँ पे? मैं टेक्स्ट फील्ड इंपोर्ट कर रहा हूँ। Why can't I just import an input? I mean, if input is available,
Let me just search input. यहाँ तो अवेलेबल नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या? हाँ, मतलब इतनी मेहनत फालतू की. लेट्स सी. दोस्तों टाइम भी बहुत हो गया. ओके, विल ट्राई दिस लास्ट थिंग. कूल. So it's being used only at one place. And let it be. Let's do this. हाँ, इनपुट पहले कहाँ डिक्लेयर कर दिया भाई? कंपोनेंट्स ही भाई. Okay. Can I do something like this? Share and input, not as shared and input. Okay, that is something we can work. Or maybe let that be import input as viewing input. Okay, let's see यार. ठीक ठीक है, एक ही जगह है ना. Let's just comment that for a while. We'll figure out something. है ना? इसे उठाएंगे. And you are saying टेक्स्ट फील्ड पे ले चलो. डिफॉल्ट वैल्यू हम ये उठा लेंगे. इनपुट प्रॉप्स को हम हटा देंगे. रीड ओनली में हम ये डाल देंगे. और टेक्स्ट फील्ड को लेट्स कमेंट फॉर अ व्हाइल. सेव दिस. लेट्स सी व्हाट कम्स अप. ओ भाई, ये क्या हो गया? उसका ऑन क्लिक भी तो वो कर रखा है मैंने. फिर क्यों भाई? उफ. ये भी तो रीरेंडर नहीं हो रहा है. मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है. I mean, this is changing it.
least this also should get re-rendered because इस पे क्लिक होता है तो stops. Let's see. This is the last attempt, last 2 minutes of us attempting, trying to figure out. MUI बहुत दिक्कत देता है यार, मैं MUI हटा ही दूंगा अगर मेरे को इतना इरिटेट किया तो in the longer run. 4 बार क्यों रेंडर हो रहा है? Okay. सी, अब ये हो गया, इसको री रेंडर ही करना पड़ेगा। उसको री रेंडर में करूं तो करूं कैसे, करूं कैसे? दोस्तों एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारा जो वो था एटलीस्ट कोड वाइज, जो हमें सीखना था कुछ नया, वो हमने यहाँ पे कर लिया, राइट। इस जस्ट हम वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं यूआई पार्ट, तो विल डू दैट टुमारो, विल लुक इनटू इट लेटर। What later? I mean tomorrow early morning, and then if I'll find a solution, I'll let you know tomorrow. बाकी मिलते हैं आपसे कल, ठीक है दोस्तों? चलो बाय, राधे राधे।